Hi, girls and boys. I'm sure this music is heaven to our ears. हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है. लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ हम कैसे अपने माइंड को चैटरिंग से चैंटिंग की तरफ लाएंगे. हाउ कैन वी ब्रिंग आवर माइंड फ्रॉम चैटरिंग टू चैंटिंग. एंड अनदर क्वेश्चन, व्हाई वी शुड बी चैंटिंग. Why should be doing सिमरन. चैंटिंग बोलो, सिमरन बोलो, मन में बोलो, ज़ोर से बोलो. So why not directly meditation? Because we cannot meditate till the time our mind is peaceful. And what makes us peaceful is chanting. Chanting of any name which has got power. And so I have come out with I will be getting you some proofs, showing you some proofs how chanting has helped so many people in so many issues. So we'll just go with those things. When I'm saying chattering means our mind keeps on thinking so much, talking to itself. Every time we are talking to ourselves, our mind keeps telling us something or the other, the past, the future, but not the present, what's happening. We are never bothered about what's happening in the present moment. We are always in our past or in the future. And that chattering is really, really bad for our health. So why not make it chanting instead of chattering? Because when we chant something slowly and gradually, we get used to, and our mind gets used to that kind of chanting. And there'll be a time, ऐसा टाइम आएगा जब हम नहीं करेंगे, हमारे अंदर वो हमेशा चलता रहेगा. एक समय आता है जब वो जो नाम जिसको हम जप रहे हैं, जो हम चैंट कर रहे हैं, कोई भी पूजा का नाम हो सकता है, कोई भी हमारा मंत्र हो सकता है, ओम ही ले लो. जब हम करते जाते तो वो हमारे अंदर जाके एक किस्म का चलना शुरू हो जाता है. उसको बोलते हैं नाम चल पड़ा. और वो स्टेज जब आ जाती है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता. दिस इज़ साइंटिफिक एरा and we don't want to listen to anybody just like that. So some scientists have proved, they have shown us that why chanting has helped us. So I have just cut and pasted some of those proofs and I'm just putting it before you. I'll be reading it to you so that you know. So it actually works. And it has worked for me. I have seen many people being helped. Especially there is a lady I know who does 16 rounds of Hare Rama Hare Krishna every day. And I see the peace on her face. So I just couldn't resist making this video for you. I feel it has helped me. It will help you if you just imbibe this in your everyday life. So this is on what happens when you chant Om. A girl, Anvesha Roy Chaudhary, she's a young girl, 14 years old, student, who's presented her research on how the sound of Om had a profound effect on reducing fatigue. Fatigue मतलब tiredness, थकना. उसको कैसे reduce करता है Om, उसने उसके ऊपर कोई research किया है. During her research, Anvesha found that sound with particular frequency, if heard or recited right, raises the level of neurotransmitters and hormones like serotonin, dopamine, and so many others. As a result, the level of oxygen in the blood soars, while the level of carbon dioxide and lactic acid drops, which allows the person to act without fatigue. एक्चुअली जब हम कोई भी चीज़ को रिसाइट करते हैं, बार बार चैंट करते हैं, कोई अच्छा नाम चैंट करते हैं, तो उससे हमारे दिमाग में जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाता है, लैक्टिक एसिड कम हो जाता है, जिससे पर्सन जो भी कर रहा है उसको जो थकावट है वो कम हो जाती है. सो elaborating on her inspiration she got for discovering this amazing aspect, she says, or she said, it all started when she visited Uttarakhand and found saints carrying water and covering a distance of 68 kilometers every day without tiring. कुछ सेंट्स थे, कुछ अच्छे साधु थे जो रोज़ पानी लेके जाते थे. 68 मतलब किलोमीटर्स तक थकते नहीं थे लेके जाते हुए. द सेंट्स sang भजन्स ऑल along their travel. पूरे रास्ते में भजन्स गाते जाते थे. However, Anvesha could not memorize the tune, so she started looking for a similar tune for her experimental study. Finally, a tune with 430 hertz clicked, and in 5 experiments she conducted,
On various adults in various laboratories, she found that oxygen level in the blood had increased and vice versa. The carbon dioxide had significantly reduced. She concluded that sound has a powerful impact on the hormones and a person feels energized while chanting Om. She basically worked on Om. And for those people who find seated meditation difficult, singing meditation can be just the ticket. Music bypasses the thinking mind, the worried mind, and goes straight to that part of the brain where the emotion reside. The musical meditation of Kirtan soothes the nervous system just like yoga class, but are easy and fun. Kirtan calms the mind without struggling to concentrate. So it so happens that so many times people are not able to sit and do meditation or chanting. So for them, if they're moving around and chanting, nothing works more than that. So they can even do that. So Kirtan, I will just suggest you that I'll put a link also in this video. There's one Kirtan Kriya which is beautifully made, kind of a meditation which you can do or you can listen. It will give you lots of peace. Just go in that comment section and I have put a link of that video. Do it every day and see the change in your body. ओम का उच्चारण करने से हमारे अंदर जो तनाव है वो कम होता है. अगर आप कोई काम करते हुए थक गए हैं तो ओम का उच्चारण कर लीजिए. ऐसा करने से थकान दूर हो जाती है. ओम का उच्चारण अगर आप लगातार करते हैं तो शरीर में शांति आती है, उससे शांति से भर जाता है. ओम का जाप हमारे शरीर में कंपन उत्पन्न करता है. ओम उच्चारण करने से हार्ट और पाचन तंत्र दोनों ही ठीक रहते हैं. यहाँ तक कि नींद ना आने की समस्या भी कुछ समय में ठीक हो जाती है. इसलिए सोने से पहले अगर आप ओम का उच्चारण करें तो आपको एक अच्छी नींद आएगी. और अगर आपको अपना रूट चक्रा को बैलेंस करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, सेफ्टी लानी है और आपकी बैकबोन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो वल्लभम गजानन एकदंतम एक ऐसा मंत्र है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, आपके अंदर पूरी शक्ति लाता है. आपकी अगर बैकबोन स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा नहीं हो सकती, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी. सो वल्लभम गजानन एकदंतम को करा जाए तो इससे आपकी काफ़ी हेल्थ इम्प्रूव होती है. देन देयर इज़ अनदर मंत्रा हरे रामा हरे कृष्णा विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर नीज़ प्रॉब्लम. जिसको घुटनों के इशू है, प्रॉब्लम है, उसके लिए हरे राम हरे कृष्णा मंत्र बहुत अच्छा है. ये मिस्टर नारायण ने प्रूव किया है. दे आर चक्रास इन द नीज़. दे हैव टू रोटेट क्लॉकवाइज टू रिसीव यूनिवर्सल एनर्जी. During pain or disease, these chakras rotate anti-clockwise and thus universal energy stops flowing. While chanting the above mantra, intent or request, you have to just say भगवान को कि मैं ये मंत्रा चांट कर रही हूँ तो ये मेरे जो नीज़ के जो चक्रास है वो क्लॉकवाइज चले. नी चक्रास रोटेट क्लॉकवाइज रिसीविंग मोर एंड मोर यूनिवर्सल एनर्जी. जब भी हमारे बॉडी में जो हमारे चक्रास हैं वो जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारी शरीर में जो भी इश्यूज़ हैं, बीमारियां हैं, वो ठीक रहती हैं. जब वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो बीमार होने शुरू होते हैं. तो जब हम ये हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र जाप करते हैं तो जो हमारे नीज़ के चक्रा से वो क्लॉकवाइज चलते हैं, जिसके कारण हमारी जो नीज़ की प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू होती है. मिस्टर नारायण ने ये प्रूव किया है, बहुत लोगों पे ट्राई किया है. आप भी ट्राई करके देखिए कि अगर किसी को नीज़ की प्रॉब्लम उसको सजेस्ट कीजिए कि आप हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें. वी ऑल यूजुअली चैंट इन द multiples of 9 because it's a mystical number from ancient time, and 108 is a multiple of 9. However big it number is, even if you add the multiples of 9 you will always get 9. So it's a symbol of supreme shakti or energy which always remains constant, but it changes from one form to another, but it is always constant. We should not only chant 108 times, but as many as times of 108 times, and in some time, in some days, you'll get used to, so much used to, that you need not chant. And with in counting, I mean to say, not you won't be counting and chanting, but it will happen on its own. While sleeping you will be chanting, by waking up, while talking to somebody, or whenever, in whatever state you are in, you will be chanting. And if that state comes, you'll be in a happiest state for sure. Have you ever observed that if you have heard any song at night and when you've woken up, that song is still there in your mind? That is the power of our subconscious mind.
So imagine if a song can stay for such a long time in your mind. What about if you just chant at night and sleep? It will stay throughout night in your mind, and you've already seen the power of chanting, the profits you get, the benefits you get. So if you chant day, night, and sleep also, during sleep you chant and sleep, so how much benefited you are. So just imagine, just take the power of chanting, just observe the power of chanting and get into chanting and not chattering. Stop chattering, get into chanting, and then into meditation will happen on its own. If you are into chanting, meditation will start happening because your mind will be very, very peaceful. So just practice, practice, and practice, and stay healthy.